A very good morning dear students. Today topic is direct and indirect, and today we will continue this topic. In previous class we have learned about the assertive sentence and how we will convert to direct to indirect, and today we will learn imperative sentence conversion. Okay, so how we will convert imperative sentence, and first you will understand about the imperative sentence. What are imperative sentence? Imperative sentence, it gives us command, order, request and advice, and we ask for help. Okay, and imperative sentence, for example, shut the door, okay, and please give me this water, okay, and don't eat too much, and put it down. These are example of imperative sentence. And for conversion imperative to imperative sentence, direct to indirect, we have to learn these 5 steps. First is identify. So how you will identify for imperative sentence? तो हमें सबसे पहले identify करना है. First you will identify subject, and then you will identify object, and third reporting RV, it means reporting verb, and then after we will identify pronoun. Okay, and then after time denoting words we will identify. Second step, that is change of reporting verb. Okay, अब हमें reporting verb कैसे change करनी है in imperative sentence? पहले हम कैसे करते थे? said किस में चेंज होता था, said to किस में चेंज होता था. अब थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, imperative sentence में यदि said और said to लिखा हुआ है, then how you will convert? The place of said and said to we will write ordered, requested, advised, suggested, forbid. Okay, so change of reporting verb we will do according to this. Next, third is replace with to. Okay, replace with to, it means पहले हम assertive sentence में क्या करते थे, जो inverted comma होती थी हमारी, उसको हटा करके हम क्या करते थे, that का यूज़ करते थे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम वर्ड टू का यूज़ करेंगे, टू वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप इज चेंज ऑफ प्रोनाउन. फोर्थ स्टेप फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन सेम एज इट इज़ जैसे हमने किया था असर्टिव सेंटेंस में. जो सिंपल सेंटेंस थे उसमें हमने first person it will change according to subject, second person we will change according to object, and third person it will not change, same as it is we will write. And you will learn this acronym, and the help of this acronym you can learn easily. Okay, and fifth step is update time specific words. Okay, so update time specific word, how you will change? Same as it is here, it will change in there, tomorrow, the next day, today, that day, yesterday, the previous day, this, that, now, then, tonight, then night, that night. Okay, so we will change according to this. And one important step we will not use in imperative sentence, क्या था हमारा? tenses. Yes, we will not change tenses in imperative sentence. Okay, so only we will learn 5 steps for imperative sentences. There are some important rules for conversion direct to indirect speech in imperative sentences. Okay, so first is we write object after reporting verb. And one more important thing, if there is no object in indirect speech, we try to write in indirect speech as per the meaning and sense of the sentence if no object is here. And second is after writing to we will write verb first form, and third is word please and kindly word, it will be eliminated. एंड नेक्स्ट नेगेटिव फॉर्म के लिए हम टू नॉट टू यूज़ करेंगे एंड फॉरबिड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम नॉट टू का और फॉरबिड का यूज़ करते हैं. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर कन्वर्जन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन इम्पेरेटिव. नाउ स्टूडेंट, दीज आर इम्पॉर्टेंट टिप्स. ओके, एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर कन्वर्जन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट we will write subject as for subject, and RV it means reporting verb, and O for object, and this is to. And then after we will write V1, it means verb first form, and then we will write RRS. And S for subject, and RV it means reporting verb. Okay, O it means object,
V1 it means verb first form, RRS it means rest in reported speech। जो भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच बच गई है उसके बाद में हम वो लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर वी विल यूज फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड फॉर नेगेटिव, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव है देन व्हाट यू विल डू, सो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहाँ पर हम फॉरबेट का यूज़ करते हैं। फॉरबेट इट मीन्स किसी चीज़ का मना करना। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, डू नॉट या डोंट का यूज़ करते हैं तो हम फॉरबेट का यूज़ करते हैं, ओके। और जो टू है उसके बाद में हम उसके साथ में हम नॉट टू का यूज़ करते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर वी विल यूज़ फॉर इम्पेरेटिव। एंड देन वी विल राइट चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। उसके बाद में हम जो प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे एंड देन वी विल राइट द टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, ओके। सो दिस is a most important. Now students, I will explain conversion of direct to indirect in imperative sentence with the help of this example. This is an example. The teacher said to the students, complete your homework tonight. This is an imperative sentence and we will convert in indirect speech. For conversion we will use these steps, okay. First we will identify. So we will identify first, teacher is a subject and said to it's a reporting verb, and student this is a object, and complete your homework tonight. So your is a second person, okay. And tonight it's a TDW, it means time denoting word, okay. So first we will identify and then we will do second step, change of reporting verb. Reporting verb, ये जो reporting verb है said to, the place of said to we will write ordered, ओके। सो ऑर्डर्ड, ऑब्वियसली यदि कोई बड़ा किसी छोटे को कोई बात कह रहा है तो हम ऑर्डर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर टीचर है, टीचर क्या है, बड़े हैं, स्टूडेंट छोटे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो टीचर है अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ बोलेगी तो वो ऑर्डर में ही हम लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है बेटा कि वो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है, ठीक है। सो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन ऑर्डर, हम ऑर्डर का यूज़ करेंगे एंड देन रिप्लेस विथ टू। इन्वर्टेड कोमा अगर लिखी हुई है तो उसको हटाने के लिए हम वर्ड टू का यूज़ करेंगे। और असर्टिव में हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का यूज़ करते थे, बट इम्पेरेटिव में हम टू का यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटा के। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद में टू, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के बाद में हमने टू का यूज़ किया और पहले हम दैट लिखते थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो योर क्या है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो जो योर है वो किस में चेंज हो जाएगा, देयर, यानी कि जो योर है ये हमारा सेकंड पर्सन है और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जगह हम क्या करेंगे, हम केस आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टाइम वर्ड। अब हमें टाइम वर्ड का यूज़ करना है। जो टू नाइट है यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ, टू नाइट। सो टू नाइट वी विल चेंज इन दैट नाइट, ओके। नेक्स्ट दिस इज अ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन वी विल write to, and then after we will write verb first form, and then after we will write rest of reported speech, RRS it means rest of reported speech, ठीक है। So this is a structure and we will use this structure for making imperative to direct to indirect conversion. So ये हमारा direct speech है और indirect क्या हो जाएगा, the teacher ordered the students to, इन्वर्टेड कोमा हट गई, कंप्लीट देयर होमवर्क दैट नाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है,
डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. सो दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस. ही said to me, please help me with my homework. Okay, so first we will identify subject. Subject is he, and said to, this is a reporting verb, and me it's an object. Okay, and then we will identify pronoun, and then we will identify word, time word. Okay, so he is a subject and me it's an object, and said to it's an reporting verb. And this is a structure we will use for conversion direct to indirect in imperative sentence. First subject, and then reporting verb, and then object, and then we will write to, and then after we will write verb first form, and then we will write rest of reported speech. Okay, so you can learn according to this. As for subject and RB, it means reporting verb. O, it means object. V1, it means verb first form, and RRS, rest in reported speech. Okay, so how we will convert direct to indirect speech? Let's see here. He said to me. So said to me, it will convert in requested. Okay, because please and kindly word we use for request, that's why we will write the place of reporting verb said to requested. हम यहाँ क्या लिखेंगे? requested. So he requested me to. अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाने के लिए हमने to का यूज़ किया. एंड देन हेल्प मी विथ माई होमवर्क. हेल्प मी, जो मी है उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हिम. ओके, हेल्प हिम विथ माई की जगह ये चेंज हो जाएगा हिज में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हिज होमवर्क. ओके, मी किस में चेंज हो गया? हिम में, और यहाँ पर जो माई है वो चेंज हो जाएगा हिज में. ओके, सो जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा इसका क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम विथ हिज homework. Okay, this is an indirect speech of imperative. Now we will understand more examples for conversion direct to indirect. First example, and this structure we will use for all. Example next. The principal said to the teachers, kindly learn new technology for teaching students. So how you will convert in indirect speech? Obviously first we will identify principal is a subject, said to it's a reporting verb, and teacher it's an object. Okay, so we will convert in indirect speech like this. The principal said to it will convert in advised. The teachers to, and apostrophe, the place of apostrophe we will write to learn new technology for teaching students. Okay, this is an indirect speech of this direct speech. Okay, next example is the gardener said to him, don't pluck the flowers. Okay, so first we will identify subject. Gardener is a subject, said to, this is a reporting verb, and him it's an object. Okay, and the place of apostrophe we will use to. So indirect speech will be the gardener instructed him not to pluck the flower. Okay, not to pluck the flower. Next we can convert this direct to indirect speech in this type also. ये भी सही है. एंड अगर हम इसको इसमें चेंज करें, द गार्डनर फॉरबेड, क्योंकि किसी चीज़ नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था वी कैन यूज़ दिस वर्ड फॉरबेड. तो द गार्डनर फॉरबेड हिम टू प्लग द फ्लावर. दिस इज ऑल्सो राइट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बॉस सेड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नाउ. ओके, सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई सब्जेक्ट बॉस, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब, एंड देन we will convert in indirect speech. Okay, so said, this is a reporting verb, and the place of said we will write here ordered. Okay, so it will change according to this. Boss ordered him to complete the project now. किस में चेंज हो जाएगा? then में. Okay, so boss ordered him to complete that project then.
ओके, सो दिस इज द इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद में किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, और दूसरा इसमें टेंसेस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और जो इसके हम यूज़ करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, वो हम सेड और सेड टू की जगह ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, इन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।